31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी केंद्र के इसका लाभ उठाते हैं तो इसका कुल मिलाकर 5,675 करोड़ रुपए का इसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अगर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या पीएसयूज के एम्प्लॉयज भी इसका लाभ उठाते हैं और वो भी इसकी फैसिलिटी देते हैं तो इससे भी लगभग 1900 करोड़ रुपए का उस पर फर्क आएगा, उसको खर्चा होगा। टैक्स कंसेशन जो केंद्र की सरकार जैसे पहले कहा कि भाड़े पर दिया जाता है, उसी तर्ज पर अगर राज्य की सरकारें भी और प्राइवेट सेक्टर भी अगर केंद्र के दिशा निर्देशों को मानता है और ये जो पात्र है एलटीसी के यात्रा अवकाश के लिए, इसके लिए इनको इसका लाभ उठा सकते हैं। केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मानना होगा, इनको टैक्स कंसेशन भी मिल जाएगा। और इससे अर्थव्यवस्था में कितनी मांग बढ़ेगी, इससे 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पीएसयूज के माध्यम से बढ़ेगी और राज्य की सरकारों के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से लगभग 9,000 करोड़। तो कुल मिलाकर 28,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और जो मैंने पहले कहा कम भाग्यशाली को ज्यादा आय और ज्यादा व्यापार के अवसर भी इससे मिलेंगे। Just to recall, we said for incentivizing consumer spending, we have brought up some proposals which we want to show that before you as to what are being offered. The first one related to LTC, leave travel concession, and also encashment of the leave that they take during the LTC. That was the first part of the consumer spending heading that I had shown you earlier. Under consumer spending, we now show you the second offer, which is special festival advance scheme. As you are all probably aware, till 6th pay commission, there was this provision for festival advance, which was at the I think highest level was 4,500 rupees per non-gazetted officer, rank and below. So it pertained only to people who were non-gazetted or below, and they were given a flat sum of 4,500, and then it was repaid little by little. Now that was abolished after the 6th pay commission. When the 7th pay commission came in, there was no special festival advance. We are now reviving it as a one-time affair. Now the 7th pay commission is on, as you are all aware, and it doesn't have a festival advance thing in it. But we are now reviving it just for one time, this one time. And in that, we are not limiting it only to the non-gazetted officials. It is now going to be available for all. 10,000 rupees and not 4,500, which was the last festival advance under the 6th pay commission. So in the 7th pay commission, there was no provision for festival advance. We are reviving it. We are reviving it just this one time. And this time we are giving 10,000 rupees for all central government employees, irrespective of their position, rank, gazetted, non-gazetted, it doesn't matter, 10,000 rupees, and this shall be repaid in 10 installments. Back again they would give it in 10 installments. But this festival advance will be available up to 31st March. I think what it shows in the presentation says 31st January. No, it will be up to 31st March. And this will be given as a prepaid
RuPay card. So a prepaid RuPay card will be given to them. It's an interest-free advance. You will be able to use it for any festival up to 31st March 2021. 31st March 2021. So in the next 6 months you can use it. It's a prepaid card for 10,000 rupees. We are not limiting it for any one festival. We are not limiting it to the GST only shops. No, you could spend it anywhere you want. Of course, you can't draw it as cash from an ATM. The RuPay card gives you a prepaid. Today, we have some proposals to. Am I audible or is it? It's all right. We have some proposals to stimulate demand in the economy. I've broadly classified into two different compartments the content of what I'm likely to say today: consumer spending and that which goes for capital expenditure. So, as always, we'll have Anurag ji doing the Hindi and I do the English. So, first we talk about the background, then how are we doing the consumer spending, and then going over to capital expenditure. There's no gainsaying in the fact that the pandemic has affected adversely the economy. अब थोड़ा इस तरफ होना चाहिए, मेरा स्क्रीन सामने है. Sorry. So the needs of the poor and the weaker sections have been addressed somewhat in the various announcements that we came up with, the PM Garib Kalyan Yojana, then the Atmanirbhar package and so on. Supply constraints have somewhat eased, but consumer demand still needs to be given a bit of a boost. नमस्कार. जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि पूर्व में भी हम आप सबके बीच में आए थे इस कोरोना महामारी के समय, और आज एक बार फिर प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, वो सब आपके सामने है. लेकिन उस समय भी गरीबों की और कमजोर वर्ग की मदद मोदी सरकार करती रही, और माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी और आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी, और जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग भी बढ़ी. और उसका बड़ा कारण था कि 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अनाज देना और 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1,01,000 करोड़ MG नरेगा में उसमें उपलब्ध करवाना, और लगभग 68,000 करोड़ से ज्यादा आपके खातों में सीधे तौर पर जो डाले गए, उससे उसका लाभ भी पड़ा. और अब भी देखा जाए आपूर्ति की बाधा को कम किया गया और उपभोक्ता मांग अभी भी प्रभावित अगर है तो उसमें कैसे सुधार हो, उसको लेकर माननीय वित्त मंत्री जी आपके सामने कुछ विषय लेकर आए हैं. So, the proposals which are getting presented today are designed in such a way that they can demand by front-loading some of the expenditure or by advancing, in other words, advancing some of the expenditure with some offsetting charges later. Others are directly linked to an increase in the GDP. So this is what is before us for today. With that background given, we move over to the consumer spending related proposal. So the consumer spending related proposal has two components to it.
One is the LTC cash voucher scheme, and the other component within that consumer spending relates to special festival advance scheme. So we will be looking at the consumer spending aspect first, which has two of these components. सो मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निर्णय और कुछ घोषणाएं आज आप सबके सामने करने वाले हैं, ताकि खर्चे की फ्रंट लोडिंग कैसे की जा सके और इससे एक विवेकपूर्ण प्रस्ताव आर्थिक रूप से उसमें लेकर आए हैं। इससे जीडीपी में भी वृद्धि हो, उस पे भी इसका असर होगा और इससे लोगों को भी बल मिलेगा, राहत मिलेगी और डिमांड बढ़ेगी। उस दृष्टि से एलटीसी कैश वाउचर स्कीम एक ये लेकर आए हैं और दूसरा स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम ये आपके बीच में लेकर आए हैं, ताकि यात्रा अवकाश भत्ता योजना में जो आगे आपके सामने विस्तार में रखी जाएंगी, उससे कैसे व्यय बढ़े, उपभोक्ता व्यय कैसे बढ़े, उस दिशा में कदम उठाए गए हैं। So the first of the two components on consumer spending is on the LTC cash voucher scheme. You're all aware that government employees and many organized sector employees have had their jobs protected, their salaries protected, and as a result, some initial indications show that savings have increased. Because of the lockdown, many of them could not even spend their usual expenditure. So we would like to incentivize them to contribute to the revival of the demand for the benefit of the less fortunate. So what is it that we want to do to the leave travel concession cash voucher scheme? You are aware that central government employees in a block of 4 years, in this case we are taking the instant case which is between 2017-18, 18-19, 19-20 and 20-21, 4-year block in which employees normally would have gone or would have availed of one leave travel to any destination of their choice, or one leave travel concession or leave travel to any destination of their choice plus one to their hometown. Otherwise, if they didn't choose a leave travel to any one destination of their choice, they would go 2 times to their native village. So one travel to a destination of their choice or 2 travel to their native place. Sometimes it could be 1 plus 1, 1 of their choice and 1 to their native place, or 2 to their native place, which means air or rail fare as per their scale of pay, entitlement and so on is reimbursed to them. And in addition to that, when they take the leave travel, they also get 10 days of leave encashment for that. The leave encashment has a tax component, they pay tax on it, whereas the LTC, which is the travel fare, is tax exempt. In the scheme that we are coming up with now, all this remains the same. Where the taxation was levied on 10 days of their leave concession, that will still be levied. But on the airfare travel, it will not be levied. But can they travel now? They can't because of COVID. Many of them don't want to. So instead what we are offering is, they could have that monies given to them, for which we have had about 3 kinds of slabs created, and based on that 3 slabs, which is as per the government rules and procedures, they could spend that money in buying something of their choice.
So the amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get, and that which will continue to be tax free will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. So you won't be buying those items of food, essentials like which are in 5% slab, but you will spend them on items which have 12% or more GST. You won't just spend that amount, you will spend 3 times that amount. So this comes as an advance for you, and you spend 3 times more on items which are 12% or more in GST taxation. And even more, you will spend them only in a digital mode, no cash transactions, and you will spend them only on GST registered places which sell such goods or provide such service. And therefore a GST invoice will be required and they will be reimbursed. So otherwise the LTC ticket fare component, which is now divided into 3 flat rates per person that you normally take, will have to be given, taken, and you spend 3 times that amount to benefit from this scheme. Whereas your leave travel, on which there is a tax component which continues, which is not a new tax, that if you spend just 1 time, that will be sufficient. All this has to be done, meaning you will have to spend it all by 31st March 2021. So this is the first one on the leave travel. I'll go to the next one afterwards, after the Hindi, which is the festival advance. But now the LTC and related leave leave encashment will be said in Hindi by Anurag ji. धन्यवाद। जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि यात्रा अवकाश भत्ते का जो कैश वाउचर स्कीम है, इसको मोदी सरकार आपके सामने लेकर आई है, क्योंकि इस महामारी के समय देश और दुनिया पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह से कोई भी आर्थिक तनाव या दबाव नहीं बना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इनकी सैलरीज भी प्रोटेक्टेड थी और इनकी जो सेविंग्स है, बचत जो हुई वो भी ज्यादा हुई सरकारी कर्मचारियों की। तो इस समय इनको और राहत देकर किस तरह से जो कम भाग्यशाली वर्ग है उसका भला भी कैसे हो, नगद वाउचर इनको मिले एलटीसी के माध्यम से, यात्रा अवकाश भत्ते के माध्यम से, और जब ये खर्चा करें तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको भी व्यापार करने का अवसर मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी। तो इसके लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 4 वर्षों में, 4 वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है। एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके, और 2 बार अपने घर, जहां पर भी उनका घर है वहां पर जाने का अवसर मिलता है। और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट के अनुसार ही मिलता है, और उनको रिम्बर्स, उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण, वो भी 10 दिन का किया जाता है उनके तनख्वाह और डीए को जोड़कर। और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले। जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो नहीं ले पाए
उनके लिए इसका लाभ मिलेगा। एक तो ये होगा, लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है। नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा, और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश रद्दीकरण का पूरा भुगतान है, ये पूरा किया जाएगा। और इसकी जो पेमेंट है, ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा। जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज का है, वो वैसे किया जाएगा। और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इसके स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा। इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है। और जो उसका अवकाश नकदीकरण, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा। और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं, उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा। और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है, और उस पर ही भुगतान करना है। और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है, ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले। और जो इसकी जीएसटी इनवॉइस होगी, बाद में इनको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी जब इनको अपना क्लेम तो क्या, इसमें तो पहले से ही प्री लोडेड है, इसलिए जीएसटी इनवॉइस भी इनको देनी होगी। धन्यवाद। So what is the financial boost that we assess that this will, and our assessments are very conservative. We think that the central government employees, if they opt for it, this will cost around 5,675 crores. And employees of the public sector banks and employees of the public sector other undertakings will also be allowed to avail of this facility. And we think for them, for the PSBs and PSUs, the estimated cost for them will be about 1,900 crores, which anyway they will have to bear if the LTC schemes were to be running without any obstruction. But because of COVID, people are not able to travel. Now we want to tell them that you don't need to travel, but the travel fare you take and spend it so that it gives a boost to the economy. Now the tax concessions, as I said earlier, are available for all those tickets which central government normally gives for the LTC. These tax concessions are available even for the state governments, so, and for the private sectors too. So if they choose to, we are not saying they should, if they choose to give such things for their employees, both the state governments and private sector, they, whoever in their roles is entitled for LTC, they will also get the benefit of the same taxation benefits which the central government employees get. So the demand infusion in the economy by the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC, for them if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. So that will be the demand infusion. And when we say state governments, we've given a conservative estimate. If all of them join, it can be even much more. And state governments again do have their own LTC designed to help the states. In some states they allow the LTC only to travel within the state, and in some other states they allow travel outside the states also. So there can be some variation in the scheme, but I'm only giving you a conservative estimate of 9,000 crore. So additional consumer demand generated as a result, we expect will be
in the range of 28,000 crores. दोस्तों, बेसिक सैलरी का 53% डीए के साथ इसमें 4% एरियर का पैसा सभी कर्मचारी पेंशनर्स के खाते में। केंद्रीय कर्मचारी हैं, सभी ध्यान दीजिएगा साथियों। 3% डीए के साथ इसमें 4% एरियर पहली बार सरकार द्वारा इसमें माननीय भाजपा की तरफ से इसमें आप सभी का हित में ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, इसमें भाजपा की तरफ से पहली बार 4% एरियर का पैसा जल्दी यहाँ पे लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में जमा होने जा रहा है। 53% डीए के साथ सरकार की तरफ से इसमें पेंशन बढ़ोतरी 5 से 15% सरकार द्वारा यहाँ पे की गई है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से सुन लिया होगा साथियों, इसमें 2025 तक आप सभी की जो कि डीए महंगा भत्ते की जो कि अवधि का इसमें सरकार ने यहाँ पे बढ़ा है। इसमें भारत सरकार की तरफ से बताना चाहूँगा, इसमें लाखों पेंशन धारकों के इसमें 18 महीने बका डीए एरियर का पैसा इसमें जो कि कोविड-19 से जो कि आपका रुका हुआ डीए महंगा होता है जल्दी यहाँ पे पेंशन धारकों के खाते में यहाँ पे जमा होने की यहाँ पे 100% संभावना हो चुकी है। इसी के तहत ही सरकार द्वारा इसमें बेसिक सैलरी का आप सभी का इसमें 53% डीए मरेज के साथ इसमें सरकार की तरफ से 4% आपका एरियर, ये सरकार की तरफ से इसमें बड़ा ऐलान यहाँ पे कर दिया गया है। ये आज की बड़ी खबर थी साथियों। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय जवान।